afternoon. It's my immense pleasure to welcome you for this faculty program organized by RBMI Group of Institution, Research Asian Foundation, and Research Culture Society. Topic of this national level faculty development program is outcome-based education, teaching and learning capacity building. So today I welcome Dr. Preeti to continue his session. Dr. Preeti has took a session yesterday also. So we know her very well. Dr. Preeti is having 15 years of teaching experience, working as an associate professor in the Department of Education in Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. And the area of interest is basically, ma'am, is personality development, stress management, emotional intelligence, society, media and culture. And ma'am have received so many national awards. So I welcome you, ma'am. Please start your session. Thank you, Arpana ma'am. Thank you, ma'am. So now I'm sharing my screen. So today, thank you, Arpana ma'am. Thank you, Chirag sir, for giving me this opportunity. Now today's my topic is innovative pedagogy and the practical implementation. It's not only for the teacher education teachers, it's for all because we all are the teachers, we all are the professors, associates, and the assistant professors. So it is the important, I can say the important topic for everyone nowadays for the most modern technologies world. So this topic is really very important. So I can say that innovative pedagogy and practical implementation. So I defined it I before that I just give some introduction about this. That we know that in the school or in the college there is a principal, and the role of principal is what? It's like a captain who's steering a ship towards the destination. Right? Same in that way, the principal thing that what is my motto, what is my objective, that how could I make my school or the college in a better way. So this is the objective of any principal, or and same these objectives can fulfill by the teacher. Means the role of the teacher here is very important because they are only the person who can fulfill the objectives of the principal and the school, we can say, right? So here we always want that the teacher has to use this type of pedagogy or this type of innovative pedagogy that which can help students for learning fast and learning smoothly, and for at the last end of the life they can learn everything. So in that way they want to give the knowledge to the students. Here first this is the keyword. And if we are talking about the innovative, everyone knows that the innovative means the new things or thinking differently, creative new ways to solve the problem, bringing new ideas into practice. So this one is very important. Now here the new ideas into the practice, we can say for teachers, what type of idea we are using. So the pedagogy, in the simple way, we are saying that the pedagogy means method of teaching. So it is a very, I can say that it is a very narrow defined definition of the pedagogy. In the broader way, we can say for the learning and teaching process. For teaching and learning process, it is important for the teacher to use the different type of method and the technology. And this is called a pedagogy. And nowadays, in this 21st century, we are using a different type of technology. Yesterday, I told you about that after the COVID, we introduced so many things about this teaching method. This new technologies has been changed. So for today, I'm using different type of teaching method. I'm giving you the information about this. This everything you can find out from the book or from the net also. But how we are using, what are the benefit of this? This we are going to discuss, or I'm giving you the information on this. So pedagogy is like a teaching learning process. We are using a different type of
teaching methods. Here it is likely to improve the quality of teaching and way it is received by the student. So it is very important for the teacher to give the best possible practice for a classroom setting. First we have to improve, first we make a classroom very in that way that the student can learn, they want to come to the school, they want to come to the classroom and want to attend the lecture of the particular teacher. And every teacher is like a actor or actresses for the student, right? So if teacher अच्छा पढ़ाता है तो बच्चों को they always eager to know the knowledge, and the teacher is just a blank और वो नहीं पढ़ा रहा है अच्छा और मोटिवेशन नहीं दे रहा है, टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं कर रहा है, so that the students never want to learn something new. So it is very important for the student, for the for the teachers that they should use the innovative methods here. We can say that and we observe that for the old pedagogy method, what type of old pedagogy method? Actually, the pedagogy is of the three types. We can say that the first one is the old pedagogy, that is called the teacher centered. So it is fully based on the teacher. Now, teacher is the main focus for the education. Now, the teacher can deliver the lecture, teacher can allow to the student to read aloud, recitations. So this everything is instruction which is given by a teacher. So this one is called the old pedagogy. Now the new pedagogy, I can say that innovative, as per here I given that the 21st century has evolved the beyond the textbook and the chalkboard. So teachers must adopt flexible and innovative pedagogy that meet diverse learning needs. Innovative teaching strategies not only enhance student engagement but also the nature essential life like problem solving, adaptability, and the teamwork. It means what? Students are taking interest to solve the problem. Now, what is the problem? Education is not a problem, or the topic which is teaching, which the teacher is going to teach, is not a big problem. But how the student can learn and how can the student grasp all the knowledge, it is very, very important. For that, it is by this method that student can solve their own problem, own problem related with the topic, and they can adaptability, teamwork ho jayega. So it is very easy for the student to learn something nicely, right? And the third one is the critical pedagogy, which encourage the student to question society norms and empower them to contribute to change. This one is the third, where we are teaching about the society, we are teaching about the how you can involve in the society, how can you change the world, how can you change your society, what is the importance of this. So this is the third, we can say, the third pedagogy. So first one is the child center, second is the, sorry, first one is the teacher center, second is the child center, and the third one is the critical pedagogy, which one is related with the what type of student we are going to make for the society. That one is the three. Now it's on you that what type of pedagogy you are using in your classroom. Now it is the time to say that new pedagogy is very important, but critical is also very much important, because student को बनाने से बच्चा सिर्फ जॉब करे, this is not the criteria of the teacher. Teachers want that students ऐसा कुछ नाम करे कि उसका नाम सभी जगह हो, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा कुछ काम करे. So that is also very much important for the teacher. So third pedagogy is also important. And as we know that as per the Bloom's taxonomy, it is given by the Lorien Edelston. He revised it, and this is called that we always heard that the sixth Bloom's taxonomy is given, that the remember, understanding, applying, analyze, evaluating, and the creating. So if we see that with this slide, that the remembering and understanding, these are the teacher can think before the classes. Then during the classes, what? Applying and analyze. जब वो क्लास में जाते हैं तब अप्लाई करते हैं, उससे पहले रिमेम्बर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. आफ्टर द क्लास
evaluating and creating. So these all are very, very important as per the Bloom's taxonomy. And as before, in the old pedagogy, we learn it like that, remembering, understanding. In that way, we are making a question paper. In that way, we are making a question paper and taking this technique we are using for the assessment and for the learning, for the lesson plan when the teachers are coming for teaching in the class. So they are using everything like that. In this type of lesson plan, we are going to make, right? But now it's little bit the change ki what type of thinking the teachers can think for this as per the Bloom's taxonomy. So before, during, and the after classroom. Now we can say that why the teacher changed from the old method to the new. Why it is important? Anyone want to give me the answer to why the teachers changed from the old method to the new? Anyone? क्यों चाहते थे कि हमें ओल्ड से न्यू में आना पड़ा? Anyone want to give the answer? I think you all changed it according to the Bloom's. आपने भी change किया होगा. So why it is important? Both of the technology main Due reason. to, very good, due to technology. And very important thing that teachers want that before 30 or 40 years back, just we think about the government job. कि भाई गवर्नमेंट जॉब हम ये क्लियर करेंगे हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. Nowadays we have so many opportunities. A student can join anything in the private sector. They can go abroad for the higher education. आपने देखा होगा पहले जब कभी मूवीज में देखिए या कहीं पे भी, तो अगर कोई फॉरेन से पढ़ के आ रहा है तो पूरा फैमिली दे आर गोइंग टू फॉर दिस, जब एयरपोर्ट जा रहे हैं तो सारी फैमिलीज है उनके साथ, है ना, और पूरा एक बहुत सारे लोग हैं कि वो बच्चा जो है वो बाहर पढ़ने जा रहा है. तो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग ऑन दैट टाइम कि एक सिंगल पढ़ने जा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात. Nowadays it is very common in the Gujarat. Each and every home I saw that all children are try to go abroad for the higher education, for taking a job. Nowadays it is a very common. So it is what हमको अगर बच्चों को बाहर भेजना है, so we have to adopt these type of technology. और वो जो टेक्नोलॉजीज दूसरी कंट्रीज में हो रही हैं वो सब टेक्नोलॉजीज भी हमें यूज करनी है. So the traditional, here I am just giving you the 6 point that the traditional education frequently emphasizes memorizing and the rote learning, only focused on the rote learning, right? So there is no chance to student can improve their abilities, they can solve the problem. Students are expected to learn the material taught to them and then memorize it for test. रटते थे और then they coming for the exam, or in the classroom they just raise the hand, yes ma'am I know the answer. Now this method frequently makes us the technology such as interactive whiteboard, everything is coming now and the teachers can teach in the classroom like that. Now here I can say that in the next year conventional and the contemporary means with the old and the new one, उन दोनों को भी हम लेके चल रहे हैं. जहां जरूरत पड़ता है we are using this. So we are means find or we can fulfill the gap of the conventional and the contemporary. So the contemporary education, the instruction serves more as a facilitator. Now here the teacher, yesterday also I told you about this, that nowadays teachers are the facilitator, researcher, counselor. So everything is based on the teacher. Now, what is the importance? The importance is to systematic method teaching, learning. I promote the educator to be reflective practitioners who always reasoning, distancing, and enhancing their instruction approach. Then by enabling the instruction to modify their lesson. These all things we can do here. Specific people, pedagogy enables personalized learning. It aids the fostering a welcoming and the inclusive learning. These everything are very important, and most important is the classroom and the student involvement, encourage. तो ये सारी चीजें जो हम आज की डेट पे देखते हैं
it was not possible at the old pedagogy method. Teachers just on that time the teachers came to the class and just taking a test or the asking the question with the student. Few had given the answer, and others are just sit like a they don't want to give the any answer. So वो भी एक तरीका था. Nowadays everyone has to involve in the education. This we can say. Now here the pedagogy encourage the student to critical thinking, problem solving, crucial abilities we can find out here in the 21st century. Research and statistic inform pedagogy. Instruction is making the decision regarding instruction, student learning that are supported by the best available evidence. And the next one is to encourage the development to traits necessary for success in both personal and the professional context, such as creativity, adaptability, and the resilience. Now, the last one is the providing student with the knowledge, skills, and competencies necessary to succeed in a world. That is also very, very important. The pedagogy plays a crucial role helping prepare them to challenge the future. Here, the difference between the traditional teaching and the modern teaching. So the teacher जहाँ पे है old techniques जिन्हें हम बोलते हैं teaching method, that is fully based on the teacher centered, then the student centered, teacher based instructions, lecture based instruction. यहाँ पे आप देखते हैं new जो है that is a activity collaborating learning. So this one is very important. The student can learn everything. Root memorizing, conceptual understanding. Here you can say the passive learning. यहाँ पे experimental learning है. One size fits for all instructions. यहाँ पे हर किसी को उसको टीचर के थ्रू ही उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. यहाँ पे personalized instruction है. Every students are different in their way. So the teacher has given the instructions or giving the teaching or the knowledge in a personal way. What type of method like the individual person, on that way the teacher is trying to teach the student. Emphasis on the content knowledge. Here the emphasis on the skills and the competency. Limited use of the technology बहुत ही कम होता था. अगर पीपीटी भी टीचर लेके जा रही है तो all students are very much eager to what the teachers is taking, and now it is a PPT. Wow, it is a PPT. अगर उस मूवीज भी दिखाने टीचर अगर लगा रहे हैं तो बच्चे इतने खुश हो जाते थे. Nowadays it is very common कि हम बच्चों को ऐसे मोटिवेशनल मूवीज वगैरह दिखाते रहे. Focus on the individual achievement. Now the focus on the real world problem solving. So in that way the student really very much improve in their life by learning this. Now here I can give the examples of the classroom that explain a topic in a class. Explain karte hain, then the student watch recorded lectures at the home. If they want, they can lectures can visit in a classroom. After the classroom, we can take the example of today's session or with this FDP. Here everything is available, sessions available in the YouTube. So if we want to learn something extra and if we forget something, so we can go through that, right? So this is the facility nowadays available, but at the primitive time it was not. Classroom time is used for discussion and the problem solving. इसके advantages हमारे पास क्या है कि flexible है, inclusive learning है, then enhance engagement and understanding, support personalized learning. Role of teacher is as a designer. ऐसा बोला जाता है कि as a designer है, blended activities, facilitators, mentor, integrated technology with the pedagogy, monitors progress and provide feedback. Now here you can see the blended activity. So here the blended activity we can say the role of a teacher. Now role of a teacher is flexible here. If she wants, she can use the old method. If she wants, she can use the new method. In that way, they can use according to her choice. जहाँ पे उसे लगता है जो method मुझे use करना चाहिए, she can use. Role of learner क्या रह जाता है? Active and the self-centered. Use digital resources effectively. Participate in the both online and the offline. जहाँ उन्हें लगता है कि offline mode में हमें पढ़ना है,
तो टीचर आपको ये ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाएगी। जब टीचर को लगेगा कि ऑफलाइन जरूरी है तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे। Sometimes there is requirement of the practical, so it is important to come to the classroom, and sometimes it is better to sit in a home and they can give the teacher lecture. So it is also the one way. Now the next one is the classroom space for the collaboration, creative and the critical thinking, a place where the students are not just passive listeners, but active participation. Here we can say that the student सिर्फ सुनेगा नहीं, उसको यहाँ पे they have to work on that. They have to give the answer. So it is very much important for the teachers, because if she is taking online classes, so students activities, active participation is required. Otherwise what happens कि teachers अकेले ही बोलते रहेंगे and no one can giving the answer. So that is what she doesn't know students are learning properly or not. So this one is also very, very important. Now below there are 10 powerful pedagogical approaches that every modern educators can use to make learning meaningful, relevant and the future ready. ऐसे 10 है जो मैंने आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ. That is blended learning, gamification, sense of competition, peer learning, dialogue method, narrative method, collaborative learning, classroom activity, engage the student in the classroom. Then next is the project-based learning, inquiry-based, flipped classroom, personalized learning, technology-enhanced learning, constructivist learning, formative and designing thinking. So these all are method or the approaches with this, right? With this new technologies or new pedagogy. Now, first is the blended learning. So here I already informed you that as per the teacher wants, she can use the online or the digital learning. So here, when you are in a classroom, what type of method you are using? You are using the online or the digital and online or the offline. You have this right to have a flexible for your teaching method. आपके यहाँ पे ऐसा है कि मतलब आप फ्लेक्सिबल हैं, जब आपको मन करे आप ऑनलाइन ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं. Is it? In some schools they are providing. Here I don't know that in your schools or the colleges they are providing or not. In Indore it is means in our college, in our university, here we are providing this. When we feel that things is required, so we can take classes in the online mode and sometime in the offline mode. If we are taking some important session like the practicals and things like that, so we are on that time we are taking the offline classes. Otherwise, ऑनलाइन क्लासेस भी हम चलाते हैं. तो आपके यहाँ पे ऐसा है क्या? एनीवन गिव द आंसर, participate in this discussion, instruct, give me the answer. बताइए आप. ओके, आपके यहाँ होता है? यस मैम, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही सिस्टम रहते हैं. अच्छा, आपके यहाँ भी ऐसे ही रहता है. तो आप कहाँ पर है? यही गुजरात में है? नहीं, राजस्थान में. अच्छा, आप राजस्थान में. वेरी नाइस. तो यहाँ पे आपको दोनों सिस्टम चलते हैं. तो इट इज कंफर्टेबल फॉर अस. आपको क्या लगता है, अच्छा है ये मेथड? यस मैम, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, देन वो अप्लाई कर पाते हैं ऑनलाइन मेथड. करेक्ट करेक्ट, है ना. और आप देखते हैं कॉलेजेस वगैरह में बच्चे मोस्टली वो लोग कहीं किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं जॉब में है. सो इट इज बेटर टू गिव द ब्लेंडेड लर्निंग फॉर द स्टूडेंट. नाउ द ऑनलाइन लर्निंग. Exactly. Thank you so much for giving me the answer, and you are really means appreciate for your answer. Very good. And I can say that in the Rajasthan we are using this, है ना? So in the classroom teacher, we can say the teacher interaction and the discussion guidance. In online learning, the video, e-content, quiz, virtual collaboration. So these things are in the online mode. Combination of offline and online, learner centered and the flexible, use of digital,
digital tools and the platform, self-paced as well as the guide learning, continuous assessment and feedback. So everything is here in the online mode. So this one is very important to know. Now the next one, देखिए components of blended learning. What are the key components of the blended learning? That the face-to-face learning. Here we can say that the face-to-face learning and जब भी आप चाहें तो आप फेस टू फेस कर सकते हैं. You are giving the, you can give the lecture, discussion, debate, group work, hand on activities, है ना. तो ये सारे काम आप blended में कर सकते हैं. And if you are in the online, so you can take the lecture on the video, means digital way. So video lectures, PPT, e-book. आजकल आप देखते हैं बहुत सारी e-book provide है, बहुत सारे ऐप provide है जहाँ पे e-books available है. So in that way, you are providing the e-book facility to the students, so you can search in that way. And sometimes the teachers want to give some type of a knowledge, so they can just open it with the YouTube, and we can show to the students. In that way, you can show. Then the next is the learning management system जो है आपका. You are using so many things like Moodle ले लिया आपने, Google Classroom ले लिया, है ना. तो ये ले सकते हैं. जब हम असेसमेंट करते हैं तो आपने देखा गूगल फॉर्म दे देते हैं हम. तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करते हैं. और जब हम असेसमेंट के और भी तरीके हैं, ऑनलाइन क्विज ले लिया, फोरम, असाइनमेंट, सेल्फ पेस्ड लर्निंग. स्टूडेंट लर्न एनी टाइम एनीवेयर, जब चाहे उसको जहां पढ़ना है वहां पढ़ सकता है. आपने रिकॉर्ड कर दिया अपने लेक्चर्स. असेसमेंट और फीडबैक आपको बताया, जैसे इंफॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों होता है. तो ऑनलाइन फॉर्मेटिव दैट इज रेगुलर बेस, वी आर टेकिंग असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. क्विज दे दिया, वी आर टेकिंग सम स्मॉल टेस्ट. So in that way, we are taking a formative assessment. In the summative assessment, at the end of the chapter, of the end of the this course, you can take the test or the exam that is called the summative. So this one is also very important. Next is very important. This method is called the gamification. तो सारे students को बहुत अच्छा लगता है, and everyone want to participate in. And it is not only for the student to take a participation, teacher is also involved. तो टीचर को भी अपने एक रिलैक्सेशन के लिए ये मेथड में बहुत अच्छा लगता है. Especially I also enjoyed very much in a classroom when I'm using this the gamification method, right? And different type of method we are making a plan on that, and students are taking a participation. Even I am also the one of the participant in that. तो ये चीजें करके बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छा लगता है. बच्चे को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फील होता है. So gamification is the teaching learning strategies in which the game elements are used in non-game learning contests to increase student motivations, engagement, and the participation. In that way, students definitely want to attend your class. The madam is not giving only the lecture. She is teaching in some different way, not like other teachers. तो वो कुछ अलग वे में बता रहे हैं. तो teachers always get the popularity if she is using a gamification method, और the different type of method अगर teacher use करते हैं तो उनकी एक अलग ही popularities होती है, और बच्चे बहुत खुश रहते हैं ऐसे टीचर से. तो gamification is the education means applying game design in that way, जिसमें आप देखते हैं कि रिवॉर्ड मिल रहा है, चैलेंजेस है, पॉइंट्स है, बैजेस है. तो आप ये सब चीजें देते हैं कि हाँ आपने ये पार्टिसिपेट किया, अब आपको ये मिल रहा है, आप इसमें फर्स्ट आए हो. इन दैट वे द स्टूडेंट्स आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन दैट learning activities to make the learning interesting and the interactive. For making a learning interactive or the interesting, so we are using this type of method. तो आप बहुत सारे methods यहाँ पे use करते हैं. You can find out yourself with this Google or with your own ideas. You can imagine ki what type of method I can use in my classroom. I'm just giving you one example. In my classroom, I'm taking the psychology subject. So on that time, I just giving some making a chit and a particular topic, and I just chits ko I just take in a bowl, and I call to one by one student and say कि भाई आप उससे pick करिए और just read what is it. तो बच्चों ने बताया कि मैम this is suppose it is given as a conscious. So now tell me the meaning of consciousness.
students are that means he is given the answer, and if he is not giving the proper answer, so I'm giving the instructions to the other. Anyone want to give the answer about this what is the meaning of this consciousness? तो कोई और बच्चा आंसर देगा इन दैट वे कि हाँ मुझे समझ में आ गया कॉन्शियसनेस मीन्स व्हाट. तो ये चीज होती है कि हम बच्चों को लर्निंग में गेम के थ्रू पढ़ाते हैं. तो इन दैट वे द स्टूडेंट नेवर फॉरगेट द टॉपिक, नेवर फॉरगेट द टॉपिक और नेवर फॉरगेट द लेक्चर ऑफ द टीचर और व्हाट वी कैन से द जो मटेरियल हम बताना चाहते हैं वो कभी नहीं भूलेगा क्योंकि हमने खेल खेल में सीखा है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल. आपको पता होगा कि दैट इन ये रविंद्रनाथ टैगोर, अगर आप वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा शांति निकेतन इज वेरी फेमस फॉर दिस. On from the last decade they have this organization Shanti Niketan. So still today they are using this type of method. They are not using a classroom. स्टूडेंट जो है वो सब बाहर पढ़ाई करते हैं और जिसको जो मन करता है उस हिसाब से खेलते हैं. दे आर नॉट यूजिंग अ टेक्नोलॉजी बट वो लोग इस तरीके से यूज करते हैं. तो दिस इज द वे. तो स्टूडेंट्स आर ऑलवेज टेकिंग इंटरेस्ट एंड एवरीवन वांट टू टीच इन अ शांति निकेतन. और जो स्टूडेंट्स वहां से पढ़ के निकलते हैं दे आर द रियली बेस्ट आई कैन से बिकॉज they have all type of a degrees from the KG class. One of my friend she has one thing boy, तो उसका बेटा है एंड उन्होंने केजी से क्लास में डाला एंड वो अभी तक स्टडी कर रहा है एंड आफ्टर द 2 or 3 years he will ready for the job. तो आपके पास सारी स्ट्रीम्स है वहां पे, मेडिकल भी है, साइंस भी है, so they can join everywhere. And this is the matter, the student never feel कि we are in a some school, so there is no rules and regulation, but the students are following the rules because they know that the teacher is following the rules. So I am also in the on the back of the student teacher, तो मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ. तो वो एक चीज होती है जो हमें सिखाने के लिए बहुत हेल्प करती है. तो कभी भी आपको मौका मिले तो जरूर देखिए. दैट इज द फर्स्ट वी कैन से द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस आशा निकेतन शांति निकेतन. आप देख सकते हैं. So what are the key elements of this? That the point to correct answer, task completion जैसे कंप्लीट होता है आपने बच्चे को बता दिया कि भाई आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे. फिर एक मिनट है ना. Then lecture, then discussion, debate. This all are things which is relate with the 1 minute. Yes. हाँ देखिए, badges for achievement and the skill. If they achieve something, so you can provide a badges and this is the means important. कुछ achieve किया तो दे दिया. Progressive learning level बता दिया, stages divide. That is the primary level and the secondary. Now the topmost level, right? Secondary में हुआ, फिर first आया. तो लीडर बोर्ड फ्रेंडली कॉम्पिटिशन कराए, challenges, quiz, problem solving task, immediate feedback, instant response to the action. So everything you can provide in the gamification. Pedagogical principles इनके क्या बोलते हैं? That is a learner centered approach. It is fully based on the learner center. Active and experimental learning. Motivation through reward. This is also very much important here. So if the students are not taking a participation in it, so you can provide it like you can take a participation and you can do these things. So always motivate the students. Students can take a participation in continuation formative assessment. It is very much required that the teacher has to take a continuation formative assessment. Learning by doing. Here the student says what they are doing, learning by doing. They can learn things. यहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे गेम्स हैं. दैट इज अ गेमिफिकेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे बताया जाता है बहुत एग्जांपल्स है. दैट इज काहोट. अगर आप देखें तो आपको ऐप में अवेलेबल है नया. क्विजेस, क्लास क्राफ्ट, गूगल फॉर्म, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बेस्ड गेम्स. So these all are the examples you can find out. These are the games. These are the games of
गेमिफिकेशन टूल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे ये सारे आपको गूगल पे भी आप सर्च करें तो मिल जाएंगे, एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट, दे कैन लर्न अ लॉट। तो ये आप ले सकते हो, काउट, डैन क्विज़ेस, क्लास क्राफ्ट, गूगल फॉर्म तो आप यूज करते ही हैं, LMS बेस्ड गेम्स जिसमें दिए रहते हैं। तो these all are very important. Then the role of teachers, game designer, also the game designer of learning activities. आपको लग रहा है तो आप भी कर सकते हैं, that is a motivate the facilitator, monitor of the progress and perform the provide of feedback, role of the learner, active participation, problem solver, self motivate and learning collaborative team member. Now these are the role of the teacher. यहाँ पे ये टीचर का काम रहेगा. Now these all are the games tools. We normally we are using a Google form, and here I am using the quizzes also. You are also using something. आप लोगों ने क्लासरूम में यूज किया है कभी कुछ इसमें से? Anyone use any tool, gamification tool in a classroom? Yes. I generally use in my class for better understanding of the pedagogy. Very good. Which tool, ma'am? Gamification and plus quizzes and everything has been used. What's your name, ma'am? It's Dr. Vandana Singh. Vandana Singh. Very nice, ma'am. Thank you so much. So, madam is also using this tool. Do use, ma'am. Yes, yes, please. Yes. Suppose I am teaching short stories of 17 oranges, then I do make 17 oranges means on paper, and then after I share it randomly. I share it with students, and then after I have written some of the portions of stories or the sentences on that very oranges, and I ask them to connect them. Yes. Wow, wow, very good. So this is your game, right? You started this, no? You are the inventor of this, right? Yes. This is your method. Very good. So Yes. this is the way, है ना? You are the teacher and you start the thinking कि मुझे अपने बच्चों को कैसे अच्छा बनाना है. What type of method I can use? So I'm really appreciate for this कि आपने इतने अच्छे method को use करा. तो ऐसे ही आपके पास बहुत ideas होंगे. You are using so many ideas in your classroom, है ना? तो this is the way the teacher has to think like that कि how could I make my student strong thinking, or I can make a good learner of the student. तो ये सब चीजें हमारे पे possible होती है कि हम कैसे बच्चे को अच्छा बना सकते हैं. Now the advantages क्या है? What the advantages we can see after using the gamification? Like increase the student motivation, learning fun हो जाता है, stress कम हो जाता है, retention and understanding improve होती है बच्चे की. They always try to say, because teachers are giving the opportunities to say on that you do this work. तो बच्चा बोलना सीखेगा, करना सीखेगा. Encourage the healthy competition, support personalized learning. So this is very very important matter कि आप उसको use करें. Classroom example we can give that madam has given that the quiz competition using Kahoot. आप इसमें देखिए बहुत अच्छे quiz आपको मिल जाएंगे और बना सकते हैं आप. Point awarded for the correct answer, badges for the top performance, reflection discussion after the game. So these all are the things we can use. Next is a very important, this is peer learning. ये हम कभी भी यूज करते हैं, क्लासरूम में यूज कर सकते हैं. और देखिएगा आप especially in the schools or for the 11th 12th classes, you just give some difficult topic which is really very boring topic or difficult topic. So what you can do, you just make a group in a classroom and say that you just this group just tell about the concept of this particular thing. Then the next group just give the advantages. Next group just give the demerits of this. So at last group you can give the conclusion of this topic. So in that way you just give the 15 minutes, and after that the student will give the explanation according to their self. वो अपने ग्रुप में 1 by 1 अपने आप को एक्सप्लेन करते जाएंगे, मैम ऐसा है. तो इसके बाद क्या होता है, बच्चा
पूरी चीजें लर्न कर लेता है, फर्स्ट ग्रुप ने ये बोला, सेकंड ग्रुप ने ये बोला, तो इन दैट वे द स्टूडेंट कैन लर्न वेरी इजीली एंड आफ्टर दैट दे कैन नेवर फॉरगेट एनीथिंग अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक. जो टीचर पढ़ाएगा उससे बेटर दे कैन लर्न विद द पीयर लर्निंग, बिकॉज स्टूडेंट उसके पसंद के हैं, उसके फ्रेंड्स उसके पसंद के हैं, तो ही कैन लर्न एवरीथिंग. You are using this peer learning in your classroom? Maybe. Yes, ma'am. Very good. So what you find, Yes, ma'am? ma'am. What you find from the peer learning? I found they learn very good things. Means whenever we are dealing with some topic, that means we are giving them with our own perspective. But whenever they are learning with peer learners, at that time they add their own colors to that explanation. That's Very why good. two colors will be there and more perspective will be developed. Correct. Very nice. And they are taking so much interest in that. Actually, ma'am, actually. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने. Anyone कुछ और बोलना चाहते हैं? Yes, ma'am. Please. Madam, we must use that giving a topic to the children and creating a rapid fire question about it. Wow. Then They are taking interest. And after that, if you are giving a chocolate to a person who has given the correct answer, they are very happy. Right? the college student, so Okay, they are not okay. getting that topic. हाँ, वेरी नाइस. और यहाँ पे एक चीज और होती है कि अगर कोई टॉपिक हम पढ़ के नहीं गए, विदाउट प्रिपरेशन, इफ वी आर एंटरिंग इन द क्लासरूम एंड वी हैव टू टेक अ दिस चैप्टर, तो हम इस ग्रुप में वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर अवर सेल्फ, राइट, कि नाउ हम उसको पढ़ सकते हैं और बच्चे प्रिपेयर करके आपको अपने आप ही याद आ जाएगा कि हाँ दैट दिस इज द टॉपिक, है ना. तो ये टीचर्स के लिए कितना हेल्प कर सकता है. तो peer learning is very important and very easy method. Here it is the center is student. तो यहाँ पे टीचर का जो काम है वो भी कम हो जाता है ना. पहले जैसे नहीं. Now here what you are doing, you just check that check or assessment कि this group is good, this is the best and this is the average. तो आप ये कर सकते हो, तो आपका काम भी कम हो जाएगा, है ना. तो this is very nice, we can say student center approach, collaborative learning, collaborative and interactive, active participation, mutual responsibility for learning, learning through the discussion and the practice. So this method is used in that way. Types क्या क्या हैं इनके learning के? Peer tutoring, one student help another, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया था. आ गया ये 1 minute. देखिए ना, आप दो लोग हैं, स्टूडेंट है सेम, आप एक टॉपिक दे दीजिए. हम अपने घरों में भी करते हैं कि या 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे, तो इफ वन इज डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक एंड शी फील दैट वेरी मच डिफिकल्ट, तो दूसरा उसे बता देगा, उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड. Peer tutoring, then the peer discussion. In classroom we are using this. Peer assessment, collaborative learning, group task दे दिया, project दे दिया. And now what is the role of the teacher here? Facilitator and guide. Only the facilitator and guide. Yes, you are correct, you are not, you can do this like that. Group organizer, observer, feedback provider. तो आपका भी काम बहुत अच्छे से हो जाता है. एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड द डायलॉग मेथड. दिस मेथड ऑल्सो वी आर यूजिंग इन अ क्लासरूम और हमको यूज भी करना चाहिए. आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस मेथड. डायलॉग मेथड में it is very much means benefit if we are teaching using this method in a literature subject, like English पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं या other language पढ़ा रहे हैं. On that time we are using this dialogue method or some type of stories. The dialogue method is a teaching method which learning takes place through the two-way conversation between the teacher and the student or among the students themselves. Learning through the question, answers, discussion and the interactive. यहाँ हम क्या करते हैं, वाई सोशल साइंस में भी लेते हैं और हम लिटरेचर्स में बहुत लेते हैं. 2 स्टूडेंट्स को हमने खड़ा कर दिया, दैट फर्स्ट इज द ए एंड द सेकंड इज द बी. यू कैन यूजिंग द साइंस इन द साइंस ऑल्सो. डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड विद देयर आइडियाज. द टीचर गाइडेड डिस्कशन, टीचर से भी कर सकते हैं. 2 स्टूडेंट्स बना दिए, वो लोग भी आपस में बन के डिस्कशन कर रहे हैं. जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर द लॉ स्टूडेंट,
लॉ स्टूडेंट्स में देयर इज अ डमी कोर्ट रहता है. डमी कोर्ट में वन इज द जज, वन इज द लॉयर, वन इज द पर्सन हु इज अ थेफ्ट और सम टाइप ऑफ क्राइम डिड. तो उस बच्चों को खड़ा कर दिया और दे आर जस्ट गिविंग द डायलॉग. In that way they can understand what is the concept of this topic and what is the concept of this thing, so that we can use. Student respond with their ideas, the teacher guided the discussion by asking further questions. And now what are the advantages in that? Encourage the critical thinking, improve the communication skills, promote active participation. तो ये सारी चीजों का आपको इम्पोर्टेंस पता चलता है when you are using this method. नेक्स्ट वन जो है दैट इज द नरेटिव मैथड. नरेटिव मैथड यहाँ पे भी वी आर यूजिंग हियर द टीचिंग मैथड इन विच द कंसेप्ट आर एक्सप्लेन थ्रू स्टोरी, इवेंट्स एंड द बायोग्राफी और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. Now just tell me, this method is we can use only for the small children or for the higher classes also we can use this narrative method? We can use it for higher classes even. Okay, so you are using, ma'am? Yes, I do use whenever I am explaining some of the other concepts. At that time, I always share with some of our Ramayana Mahabharata stories. I Wow. always connect them with that. Suppose post-colonial, if I am using any post-colonial method, then I do use experience stories for that. So I keep on doing that. And in that way the student can learn about the what the this Can connect India, very easily. They can connect very easily with the theories. Right. And what you want to learn from this, students can easily opt कि भाई ये है रामायण में और ये राम का रोल है and this is our role. हमारा क्या रोल होना चाहिए. So students learn everything from this. Yes. Suppose leadership qualities I am teaching, then whenever I am the governance of Ram Rajya, that was not ordinary. So in a way we can teach them that he was a great leader as well. Whenever we give example of Krishna even, so we do share some of the other kind of qualities of them, virtues of them with them, so that we can incorporate IKS with our own subjects. So where you are working, ma'am? I am working with Bharatiya Vidya Bhavan's College, Ahmedabad. Ahmedabad, okay, very good, nice college. And you using this type of method. What's your name, ma'am? Dr. Bhumi Vamja. भूमि मैम, बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आप ये मेथड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि स्टूडेंट ऑलवेज ट्राई टू कम टू योर क्लास एंड ऑलवेज, है ना? Yes, yes. You are a very much favorite of the student. Yes, ma'am, actually. बिल्कुल, वेरी गुड. देखिए कितने जल्दी मैंने एज्यूम कर लिया. क्योंकि अरे नहीं, वो लोग बोलते हैं जैसे किसी ने मिस कर दिया तो अरे तूने आज वाली स्टोरी मिस कर दी, वो बोले मैं पढ़ लूंगी, तो वो बोले नहीं तू मैम के एक्सप्रेशंस मिस कर दी ना तूने. हाँ, करेक्ट. So you are using all the expression in that. Yes, yes. Oh, superb. And I am pursuing my masters in IKS. Oh, nice. So, in a So way, you know everything. Yes. Very good. बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब मुझे भी अटेंड करना पड़ेगा आपका क्लास एक दिन. Definitely, ma'am. You are most welcome. Sure, पक्का अटेंड करेंगे. And anyone want to share anything? भूमि मैम ने जी काउंसलिंग एंड थेरेपी में ये नरेटिव मेथड अक्सर यूज करते हैं कि भाई ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो फीलिंग अपनी एक्सप्रेस कर पाते हैं बच्चे की, भाई ठीक है किस तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ, देन एग्जांपल देते हैं उनको भी ऐसा था फिर वो अपनी फीलिंग इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं जब भी काउंसलिंग के लिए जाती हूँ मैं. वेरी गुड. सो यू आर आल्सो गोइंग फॉर अ काउंसलिंग? यस मैम, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड. वेरी गुड. वेयर आर यू वर्किंग मैम? राजस्थान मैम. अच्छा, राजस्थान, अभी जो आपने बताया. गुड. हाँ जी, बहुत अच्छी बात है ये तो. क्या वंदना मैम ने क्या नाम बताया था आपने ना? पायल. पायल. ओके, पायल. तो पायल आप भी यूज करते हो और आप इसके लिए तो बहुत ही अच्छा. तो आपको कुछ बेनिफिट मिला इससे मैम? यस मैम, अक्सर बच्चे काफी कंफर्टेबल होकर चीजों को काफी इजीली बता देते हैं. इवन देन वो अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं करते, वो मुझसे बात शेयर कर लेते हैं बच्चे. वेरी गुड. और चाहिए क्या एक टीचर को?
Now Yes, here ma'am. you are more than their parents. Very good. So देखिए, student has really, they have so many problems in their mind. Not only the this education problem based on the education, they have some personal problems. They have some other problems. They don't want to share with their parents. So they always find, try to find out that type of a teacher who can help them, right? So in that way, जैसे अभी आप कर रहे हैं, वैसे ही बच्चे भी टीचर्स को ढूंढना चाहते हैं कि भाई ऐसे टीचर्स हमें चाहिए. तो ऐसे टीचर्स होना जरूरी है. भूमि, पायल मैडम जैसे कि आप लोग इस तरीके से बात करते हैं बच्चों से, तो बच्चे ऑलवेज यू आर द, आई कैन से दैट फेवरेट टीचर. जैसे मैम ने बताया, हाँ, तो फेवरेट टीचर हो जाते हैं. तो जाता क्या है, इट्स नॉट अ बिग टास्क टू बी अ फेवरेट टीचर. बहुत स्मॉल सा काम है, छोटा सा काम है. एक स्माइल है और बच्चों से बात करनी है और समझाना है, एक्सप्रेशन है. This thing is really very important for the teacher. If we are using a technology, so better, but technology को भी हम correct way में हम use करें. That we are learning in the teacher training college, है ना, expression with the hand movement, with the other thing. So in that way, we can make the teaching interesting. So we can take the example of the learning through the storytelling. जैसे अभी आपको बताया, किसी की biography बतानी, real life experiences. While teaching the life of Mahatma Gandhi, we are giving here the example. The teacher narrate important event in a story from to help student understand values and history. जैसे मैम ने बोला कि मैं महाभारत या रामायण बता रही हूँ लीडरशिप क्वालिटी के बारे में. Same here, we can say that what type of a values and what type the history of the Mahatma Gandhi you can relate with this present time, right? कि nowadays क्या changes आ रहे हैं और महात्मा गांधी जी ने एक होकर कितना सारा, कितना हमारे देश के लिए वर्क किया. दैट यू कैन से, है ना, दैट यू कैन टाइप ऑफ एग्जांपल्स यू कैन गिव इन दिस नरेटिव मेथड. एडवांटेजेस क्या है? मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग, improve memory and understanding, connect emotion with their learning. तो ये सब चीजें होती हैं, बच्चा इमोशन भी हो जाता है, चीजों को समझता है. Next one is again very important, that is a collaborative method. The collaborative method is a teaching approach in which students work together in a small group to achieve a common learning goal. For a common learning goal, उसके लिए we are making a group, small group, that I already informed you कि एक छोटा छोटा ग्रुप बनाएंगे. And the teaching approach we are using a collaborative method. आइडिया हम क्या दे सकते हैं? लर्निंग थ्रू द टीम वर्क एंड द कॉपरेशन. एग्जाम्पल यू कैन टेक इन अ साइंस क्लास, स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप टू प्रिपेयर अ मॉडल of the solar system. Each student has a specific role. Now for the other subject also you can use the collaborative learning. Advantages भी आप देखेंगे इसके, क्या होता है? टीम वर्क होता है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है, एनकरेज पीयर लर्निंग, इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब कोलैबोरेटिव लर्निंग कितनों ने यूज किया है? You are using, anyone use this collaborative learning in your classroom? In science you can use it very easily, but for the other subjects के लिए किसी ने यूज किए हैं? इन द साइकोलॉजी मैडम, रियल लाइफ प्रॉब्लम देकर अलग अलग दो ग्रुप बनाकर उनको सोल्यूशन करने के लिए बोला जाता है कि भाई इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओ इस बेस के ऊपर. So 2 problems you can give, right? हाँ, यस मैम, रियल लाइफ प्रॉब्लम है उससे रिलेट करके. Okay, can you give me any example like that? Which type you used to use this type of method, ma'am? जैसे हमारा राजस्थान में मैडम थोड़ा मैरिज का इशू रहता है कि बहुत कम एज Exactly. के अंदर मैरिज शादी कर देते हैं, तो वो उस इशू को लेकर और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली गर्ल्स को, तो उससे जी, जी. रिलेटेड मैंने ये यूज किया था. वेरी नाइस. आप एक अच्छा इनिशिएट उठाया आपने कि इस तरीके के मेथड को आपने यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. ये मैंने भी सीखा आपसे. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द क्वेश्चन. बहुत अच्छा मेथड है ये, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड. एनीवन एल्स? साइकोलॉजी में भी आपने यूज किया, देन अदर, एनी अदर सब्जेक्ट? ओके, तो आप साइंस में यूज कर सकते हैं, सोशल. इफ एनी टीचर वांट टू यूज दिस मेथड इन द मैथ्स आल्सो, दे कैन यूज. सब में आप यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर टीचिंग इन अ इंटरेस्टिंग वे, इंटरेस्टिंग मैनर.
कंस्ट्रक्टिव मीन्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है. कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच in which students actively construct their own knowledge by connecting new information with their prior experience. Learning happens through the exploration, discussion, problem solving, and reflection rather than the passive listener. यहाँ पे आपको पहले से स्टूडेंट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बट फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज और प्रायर नॉलेज यू कैन क्रिएट अ न्यू नॉलेज. रिलेट करते हैं, जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में. व्हाट वी आर डूइंग, प्रीवियस नॉलेज पे वी आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग द चैप्टर. In the same way, if we are in a new topic, how can we constructive it? So it based on all the students, वो करेगा काम. Active learning है, students learning by doing. Prior knowledge, new concepts are built on what learner already know. Social interaction, learning is enhanced through the collaboration and dialogue. Meaning making, emphasis on the understanding, not the memorizing. Teachers as a facilitator. Here again, they call the teacher as a facilitator because they are providing these opportunities. They are giving the guidance to the student कि आप कैसे previous knowledge को आज के knowledge में आप add करके new concept form कर सकते हो. You can take so many examples. Suppose in the last year, student learn about the this environment. Right now, in the 6th class or the 7th class, you can give that how can we clean the environment, how can we make a neat and clean environment in our atmosphere. तो वो relate करता हुआ बच्चा बता सकता है. तो new concept develop करके आप उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं. This is a very nice method you can use and very very important. Not in the our country, in the other country, it is most important method for the teaching. अगर आप बाहर देखते हैं यूएस वगैरह में ये मेथड को बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. अब आप देखो ये सारे मेथड भी एज अ प्रिमिटिव टाइम, प्रिमिटिव स्टेज इन द गुरुकुल, एवरीथिंग इज यूज, है ना, यूज होता था. बट नाउ अ डेज इट्स ऑल आर इन सम मीन्स इन अ करिकुलम वे, है ना, इन अ प्रॉपर मैनर. तो हमको ये सब चीजें पता चली, बट ये सारी चीजें हमारे पास पहले से अवेलेबल थी. Now, what is the role of the teacher here? Designing the meaningful, real-life learning tasks, encourage inquiry and questioning, facilitates group work and discussion, provide scaffolding when needed, जब जरूरत हो support दें, assist learning through the performance and the reflection. Role of learner क्या है यहाँ पे? Actively participants in the learning activities, explore, investigate, and ask questions, work collaboratively with peers, reflecting on the learning and the apply concept. So this is the role of the teacher here. तो वो बच्चों को हेल्प करते हैं. आप देखिए ये कंस्ट्रक्टिव टीचिंग के लिए आप देखिए प्रायर नॉलेज क्या है? बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग. प्रायर नॉलेज आपका हुआ बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, जो आपने पहले पढ़ा था. एक्टिव हैंड ऑन एंड एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिगेशन. डिस्कशन, नेक्स्ट स्टेज इज discussion, sharing your ideas and the problem solving. Next one, here you can see the cycle. Reflection, thinking about what was learned. क्या पढ़ा है ये पता चलेगा. New understanding, integrate new concept into thinking. Here from the prior knowledge we can develop our new understanding, new power. So this is the constructive cycle, we can say the constructive teaching cycle. So it is very very important if we are using a constructivist teaching. तो कोई टीचर्स हैं जो यहाँ पे यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग? In the schools it's normally uses. Now the next thing here, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. आपको कंस्ट्रक्टिव यूज करना है तो आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यूज करते हैं. ये आप लोग यूज करते हैं ऑलरेडी. दैट इज स्टूडेंट डिजाइनिंग अ मॉडल ऑफ अ सस्टेनेबल सिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल वर्ल्ड मैथ्स और साइंस प्रॉब्लम इन द ग्रुप, इंक्वायरी मेथड, स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेट व्हाई डज क्लाइमेट चेंज अकर. So using a data, in that way we can use. So here we can say
For the constructive method, you can use the project-based problem solving, inquiry method and discussion and debate. ये भी आप यूज कर सकते हो जब आप कंस्ट्रक्टिव मेथड में हैं. So I know that everyone is using this method in a classroom. Can you tell me how many are using this method? Anyone want to give the answer? Yes. कौन सा मेथड यूज करते हैं इनमें से आप? No one? Okay. So definitely you are using this method, but you are not giving right now answer. So I know that you are using. So this method is also very, very important. Project based learning क्या होता है जैसे मैंने बताया? Yes. Anyone want to give the answer? So the next is प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो आपको पहले बताया था. इन्हीं में जो पॉइंट्स मैंने बताया. यूजिंग दिस मेथड स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग period of the time, applying what they have learned to a challenge, a problem in the real world. So in that way we are using a method, project method. Real world problem से related अगर आप you are giving a project method, you are using this method, so it is very helpful for the students. They can solve the problem. They can improve their ability to encourage the strategies. तो ये सब इसके लिए अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए. Now in project based learning, student learning by doing. स्टूडेंट जो है वो learning by doing करता है. They work on a project, investigate problem, apply concept from different subjects. So this is also very, very important for them. Now here, features जो दिए गए हैं, that is what you are in the next slide or not? Okay. So I'm just real life problem features, it is given here. I'll just come back to the last slide. Project based learning, I informed you. Standard features, real life problem or meaningful questions. This is the features of the project based learning. Active student involvement रहेगा. आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने students को they are given the some project work. So all everything, if we are as a teacher we are using everything which is just a waste material. Student अगर उन्हें use करते हैं तो they know the use of best out of waste. Here in our college we are also using this method, and after that we can conduct some exhibition. So students के parents आए और देखे तो always appreciate like this कि मेरे बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं. Learning by inquiry and the research, collaboration and the teamwork, integration of the multiple subjects. Now you can relate or integrate it. Creation of the final product or the presentation. Continuous assessment and the reflection. So continuous assessment चलता रहेगा अगर we all are in this type of method. Inquiry based learning. Inquiry में जिसे हम बोलते हैं ना inquiry करना है. What type of inquiry? Learning that is based on the question. And independent research is known as the inquiry based learning. The emphasis is on the student-led discover rather than the lecture-based learning. यहाँ पे the student has to search something, inquire something, but instructor do offer advice and support as a student investigation news topic or the concept. यहाँ पे you can take the many examples that if you want to use this inquiry method, so you can give some idea to the you can give to the idea to the student, like in the psychology, if we are using the development of the child,
So in a college, we can say to the student, sorry, stages of development. So we can give to the student that just find out how many stages of the child development. So student क्या करेगा? Tomorrow just come to the class and inform me about the stages of the development of the child. तो बच्चा घर जाएगा and they can search it from the Google and read some book, और उसके according they can find out, and with their imagination they can find out that from the infancy to the old age these are the stages of the development. तो वो खुद ही अपनी इंक्वायरी करेगा, पता करेगा, and then they can develop the new concept in that way. And even then they can ask why we are using infancy period as the stages of development, not from the childhood. So in that way you can give the discussion. आप बच्चे से डिस्कस करिए और वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होगा बच्चे का नया. तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है. अभी आप सभी मेथड में सभी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, इन द साइंस, इन द सोशल, इन द मैथ. So anyone are using this method, inquiry based learning? यूज करते हैं क्या? यस मैम, मैं अपने बेटे के लिए अक्सर यूज करती हूँ इसे. बहुत बढ़िया. अच्छा, तो क्लास, हाँ, क्वेश्चन दिया जैसे पेड़ रात में ऑक्सीजन क्यों नहीं छोड़ते, देन वो क्वेरी उसके माइंड के अंदर, देन वो उसका आंसर सर्च करके और देन मुझे बताता है. देन इस बेस के ऊपर उसमें स्टडी करवाती हूँ. आपको क्या फायदा हुआ कि व्हाट द बेनिफिट यू गेट फ्रॉम दिस मेथड? मैडम अभी उसके माइंड में बहुत क्वेरी रहती है और इतना इंटेलिजेंट हो गया, उसका माइंड इतना शार्प हो गया कि हर चीज को, टॉपिक को जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करे वो रॉट लर्निंग से काफी दूर हो गया है. बेसिकली मुझे सबसे बेनिफिट ये So that you just share with these things with your teacher, his teacher. आपने बताया yes, teacher ma'am. को बिल्कुल बताना चाहिए Yes. आपको, यस मैम. है ना? तो टीचर्स को भी आप बताइए कि आप ऐसा यूज करके काफी इंटरेक्टिव बना सकते हो इफ दे आर नॉट यूजिंग. बेटा मेरा थोड़ा ऑटिस्टिक था, तो अभी नॉर्मल है. कुछ प्रॉब्लम था उसे, अभी नॉर्मल है और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो देखिए कितना फायदा हुआ. तो आप कितने अच्छे टीचर हो, और एज अ मदर, है ना, वेरी नाइस कि यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड. तो दिस इज योर ओन वर्क. अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? तो आपने ये चीज अपनी बहुत अच्छी स्टैब्लिश करी कि भाई बच्चे पे भी आप मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो वी कैन यूज इट इन आवर होम ऑल्सो. तो दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड. Congratulations for this. So you also discuss with your their teacher, right? कि मैडम आप ये सब मेथड को थोड़ा देखिए. यस मैम, मैं यहाँ सेमिनार करती हूँ. बेसिकली स्कूल्स के अंदर जाकर सिखाती हूँ कि किस तरह आप बच्चे को साथ में कोऑर्डिनेट कर सको. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. मतलब हम कितने अच्छे अच्छे लोगों के साथ हैं. सुपर. थैंक यू मैम. चलिए नेक्स्ट इज फ्लिप द क्लासरूम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिप द क्लासरूम? देखेंगे हम यहाँ पे दिस मेथड आल्सो वी कैन यूज. दिस methodology allow to more engaging activities like the conversation, group discussion, group projects, hand on the learning, learning by having a student video lectures or complete reading outside of the class. In that way we are using this method. In this method, in the flipped classroom, here the teachers जो है flipped classroom में student learn concept at home and then come to the classroom. जैसे आपने बताया अभी हम लास्ट जो मेथड यूज कर रहे थे वैसे ही है. वहां पे आप बच्चे को दे सकते हैं that you can learn with yourself in a home and just after coming to the classroom you discuss with your teacher. तो ये एक पैसिव लर्निंग होती है, पैसिव लर्निंग टू एक्टिव लर्निंग ये कहलाता है. यहाँ पे आके टीचर ने उसको समझाया कि आपने जितना पढ़ा है दैट दिस इज राइट, बट इन द बेटर वे आई कैन सजेस्ट दैट दीज ऑल आर द अदर पॉइंट एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. उसको कुछ अलग तरीके से और आप उसको ब्रॉडर वे में आप कंसेप्ट को बता सकते हो. बट फर्स्ट व्हाट इज द role of this new innovative pedagogy? That is a child center. So everything you just give to the student, you learn yourself, and after that come to the classroom and discuss with your teacher. So this is called the flipped classroom. तो वो आप यूज कर सकते हैं.
अब देखिए पर्सनलाइज लर्निंग ये भी एक बहुत अच्छा मेथड, बट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द टीचर. Why it is very much difficult? Because here, if the classroom आपके पास 50 बच्चे हैं, 50, so in that way personalized learning में you can use different type of method according to the student. Some students जैसे 50 का strength है, तो 50 बच्चे में 20 students को project based learning अच्छी लगती है. Some feel that peer group में पढ़ना अच्छा लगता है. Some feel कि गेमिफिकेशन अच्छा लगता है. तो पर्सनलाइज लर्निंग में आप हर बच्चे को पर्सनलाइज वे में पढ़ाएंगे. एक तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग स्किल्स बाय द एक्टिव एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और द चैलेंजेस वो उसको फेस करना सीखेगा. टीचिंग लर्निंग अप्रोच इन विच द एजुकेशन इज टेलर्ड टू द इंडिविजुअल नीड एबिलिटी इंटरेस्ट. तो उनके अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में, बट इट इज depend on the principle that they can allow the teacher she can use the personalized learning, and you can in the personal way you can give the knowledge to a student. आपकी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम मुझे समझ नहीं आया, and they will not give any type of feedback कि मैडम ने आज बताया मुझे समझ लिया. So in that way if you are using a different activities, different method in a classroom in a personalized way कि इन बच्चों को ये methods अच्छे लगते हैं, तो वो बच्चा पक्का सीखेगा. तो एक लेक्चर को आप 2 और 3 में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, and easily you can cover your course or the syllabus. Teachers क्या है, learning pace differ for every student. Why we are using? Because we know that every child is different in their way. They all are master, है ना. सबके अंदर कैपेबिलिटीज है, सबके अंदर एबिलिटीज है. जैसे भी मैम ने बोला मैं अपने बच्चे पे ये मेथड यूज करती हूँ, तो आपको पता है कि ये कमी मेरे बच्चे में है तो मैं ऐसा यूज करूंगी, और आपने बोला इतना इंप्रूवमेंट देगा और आज वो लर्निंग बहुत अच्छी कर पा रहा है. दैट इज व्हाट इट इज योर मेथड. तो ये आपने यूज किया. टीचिंग स्टाइल इज अडेप्टेड टू स्टूडेंट्स strength and the weakness. Student get choice and the voice in learning. Focus on the mastery rather than the completing the syllabus. Use of technology, projects and flexible assessment. तो ये सारी चीजें जो है that helpful for you to making a teaching very strong and learningful. तो इससे बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सीखता है कि मैं क्या चीजें जानना चाहता हूँ. Right? Here I just want to give the example of नेपोलियन का मैं एग्जाम्पल दूंगी. नेपोलियन बोनापार्टे जिसे हम जानते हैं, उनके साथ क्या था कि he was good in the education, but everyone means demoralize him because what is the reason? He is not looking good, short sighted. तो एवरीवन की भाई इतना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं दिखता ऐसा, तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता था. नाउ हियर व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर कि उस बच्चे को समझाए नहीं, बट वो नहीं बता पाते थे टीचर्स. व्हाट दे फील कि यार 40 मिनट से बाय आए, टेकिंग सो मच टाइम फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट, मैं नहीं लेना चाहता. तो उसकी मदर ने उनको बोला कि बेटा सब में अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं. If you are going that this person is saying this person is saying that, so you always be on the back. तो आपको अगर आगे आना है, if you want to be come in the front of everyone, so you have to learn that लोग तो आपको criticize करेंगे, but आपको वो सबको avoid करके you always try to do better. In that way उसने सोचा मेरी मदर ने ये बोला है, और उसने पैक ईयर्स और उसने फिर कुछ नहीं सुना और आगे ही बढ़ता रहा. एंड यू नो हिम वेरी वेल कि आज उनका मतलब कितना नाम लिया जाता है. वैसे आपको एक और भी है आपका जिन्होंने इन्वेंट किया था इंजेक्शन, मैडम क्यूरी है, आई थिंक, आई फॉरगेट द नेम. तो उनके साथ भी ऐसे ही था कि मतलब वो चल नहीं पा रहे थे, उनके साथ प्रॉब्लम थी कुछ फिजिकल. तो लोगों ने बोला नहीं नहीं ये घर पे रहेंगे, कर नहीं सकते. बट उनकी फैमिली, उनकी मदर
ने उनको बोला कि नहीं आपको करना होगा, आप करके दिखा सकते हो। ऐसा हुआ। आपने एक स्टोरी और सुनी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा, ही इज अ चैंपियन। उन्होंने रनर रनर थे वो, रनिंग करते थे, और आई थिंक ही इज इन अफ्रीका, ही वाज इन अफ्रीका, और उनको HIV एड्स हुआ, और लोगों ने बहुत उन्हें लेटर लिखा, नाम अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बहुत लेटर लिखा कि भाई आपको एड्स हो गया, एंड वी ऑल आर इन वेरी दिस मूड की यू आर अ वेरी सक्सेसफुल आफ्टर दैट यू गॉट दिस टाइप ऑफ डिसीजेस, एंड यू नॉट फील कि गॉड ने आपके साथ गलत किया है। जब बहुत लोग उनको लेटर लिखते थे, बट ही डिडंट रिप्लाई टू एनीवन। One day, daily he got 500 letters from their fans. One day he saw one letter which is written by one student, or we can say that the child who is just belong to the 10 or 12 year old. उसने लिखा कि आपको ऐसा हुआ है तो आपको भगवान पे गुस्सा नहीं आता कि आपको ये वाली डिसीज दिया। तो उन्होंने बोला कि वाई आई एम एग्री विद द गॉड। जब मैंने वर्ल्ड में चैंपियनशिप जीती, ऑन दैट टाइम आई नेवर से दैट व्हाई यू गिविंग मी दिस, है ना। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब मैंने पूरे वर्ल्ड में जब 50 कंट्री सेलेक्ट हुए, उसमें भी मैं फर्स्ट आया। ऑन दैट टाइम आफ्टर दैट आई सेलेक्ट विद इन द 3 कंट्रीज, एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट। तो जब मैं हर चीजों में फर्स्ट आया, ऑन दैट टाइम आई जस्ट गिव, नेवर आस्क विद द गॉड कि व्हाई यू गिविंग दिस। तो ये सब जो मोटिवेशन है, these all are motivation which is given by the teacher in different ways, right? तो एक टीचर को बताना आना चाहिए, एक मदर को बताना आना चाहिए कि आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, ही कैन डू द बेस्ट, और ऐसे चीज उन्होंने आंसर दी तो वो बच्चे ने उसको ऑप्ट किया। तो ये हम एक लर्निंग है हमारे भी सीखने के लिए। तो लर्निंग पेज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज स्टूडेंट रहता है, आपका अलग अलग स्टाइल है, हर बच्चा अलग है अपने आप में। तो उसको बताइए कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ and what is the weakness, why it is important to give the weakness of the student, to inform about the weakness। क्यों बताना हमें जरूरी है? give me the answer। क्यों हम बच्चे की वीकनेस बच्चे को बताना चाहें? I want to share something, ma'am. yes please। My son had some mental disorder. He is now an NCC cadet in the Jodhpur battalion. oh wow, super, how good। Mm. Yes, ma'am. main I'm motivation is given by you, I know। तो आपने बात किया तो वो मुझे हुआ कि मैं भी अपने बेटे का, तो नाउ एनसीसी कैडेट इन द जोधपुर बटालियन, सम वाह, मेंटल डिसऑर्डर। इसी वजह से मैं इसी लाइन में साइकोलॉजी और इन स्टडी को किया और जाती वाह, थी मैं। और अभी नॉर्मल लाइफ किया है, अभी वो एनसीसी कैडेट है करंटली। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। आप मुझे जरा पर्सनल बात करिएगा इसके लिए, हाँ जी मैम, मुझे जरूर। आपसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जान के। एंड मैम यू कैन ऑल्सो शेयर दिस थिंग टू द एवरीवन, राइट? and यस you मैम, अभी and I आप think you should, एग्जाम्पल। yes, and you should write something about this in the newspaper or write in a book also, because this is a best example as a mother, as a teacher। हाँ मैम, तभी हमारा एरिया है वहां पर स्पेशली अगर इस तरह के कोई मेंटल डिसऑर्डर्ड बच्चे होते हैं तो मुझसे कंसल्ट करते हैं, क्योंकि मैंने खुद के बेटे का इम्प्रूवमेंट किया। बहुत बहुत बड़ा एक मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगी यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और आपके बेटे को भी मतलब मेरा रिगार्ड दीजिएगा कि इतनी अच्छी उन्होंने अपनी मम्मी को फॉलो किया। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू मैम। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। है ना। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है। तो आपने इतने अच्छे, कुछ और शेयर करना चाहता है? एनीवन वांट टू शेयर एनीथिंग? तो दीज ऑल आर द थिंग्स वी आर यूजिंग हियर। तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए स्टूडेंट गेट चॉइसेस एंड वॉइस इन द लर्निंग, बोलना सीखेगा, उसकी चॉइस रहेगी। फोकस ऑन द मास्टरी रेदर देन द कंप्लीटिंग सिलेबस। सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे, दिस इज नॉट द वे। वी हैव टू मेक अ इंटरेक्टिव सेशन, वी हैव टू मेक इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, है ना, तो बच्चे को लगे कि मेरी टीचर मेरे साथ है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया ना, क्लासरूम वन स्टूडेंट may learn a topic through the video, another through the reading, another through the hand-on activities, all aiming to achieve the same learning outcome। सबका एक ही लर्निंग आउटकम आएगा, आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को
अलग अलग बच्चों पे यूज करिए। तो इस तरीके से हम ग्रुप बना के बच्चों पे यूज कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंटरेक्टिव मेथड that you can use. You can share the stories also, real incident जैसे मैम ने बताया, आप बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट मैथड टेक्नोलॉजी इनहेंस, फुली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी इनहेंस, जहाँ पे हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेंगे। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, टेक्नोलॉजी टू सपोर्टिव इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट डज नॉट रिप्लेस टीचर, ये नहीं होता कि टीचर को रिप्लेस कर दिया। इट इनहैंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बच्चे को अगर आप सिर्फ बोल दें यू जस्ट लर्न फ्रॉम द इंटरनेट, यू जस्ट लर्न फ्रॉम द स्मार्ट बोर्ड, नो इट इज नॉट पॉसिबल। Without saying anything, without giving lectures by the teachers, it is not possible for the student to learn the concept, because the teacher is only the motivator and facilitator. She can provide you the knowledge in like in that way. थोड़ा सा वो जरूर आ रहा है, लेकिन बाकी टीचर से उसे समझा सकते हैं और बच्चे को तभी इंटरेस्ट आएगा। पहले ऐसा लगता था कि टेक्नोलॉजी डेफिनेटली रिप्लेस द टीचर, बट नो, इट इज नॉट पॉसिबल। Now here teacher has to upgrade according to the technology, उसको आना चाहिए। Technology enhanced learning means learning with the help of technology such as computer, smart board, mobile app, internet, online platform to make learning more effective and engaging. So in that way you can make a classroom very interesting way. Features अगर हम देखें, यूज ऑफ टूल, कौन कौन सा स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर्स, टैबलेट, ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग यू कैन यूज। कभी ऑनलाइन अच्छा लग रहा है, कभी आपको ऐसे ऑफलाइन। इंटरेक्टिव कंटेंट, वीडियोस, क्विज, लर्नर सेंटर्ड है ये। एनी टाइम एनीवेयर यू कैन यूज, जहाँ पे भी हम लैपटॉप लेके जाके पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इमीडिएट फीडबैक हमें मिल जाता है, जैसे अभी सेशन कंप्लीट होगा, देन द सर विल give you the feedback form, this is what, this is that thing, you can get the feedback. Common tools used in the TEL, what are the common tools we are using? Moodle है, Google Classroom, Smart Board, Digital Classroom, Educational App जो है, e-content है, ऑनलाइन लेक्चर्स जिसमें आप Zoom देखते हैं, MS, Zoo जो आज हमने जिसमें यूज कर रहे हैं, virtual labs and simulations, AI based learning tools जो हम बोलते हैं, these everything is available in the internet, but you should know about this thing कि कैसे यूज किया जाता है। In that way you can use in a classroom. Example here I am giving, if suppose the teacher is teaching a science, तो कैसे यूज करेगी? Teacher uses animated videos, student take online quiz, discussion with the virtual classroom, assignment submitted with the digital. पूरी तरीके से हमने कंप्यूटर बेस्ड बना दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड। Here the teacher giving the information about the digestion system by the videos or the 3D models. Student एक ऑनलाइन से क्विज भी कर लिया, फीडबैक भी मिल रहा है, पता चल रहा है they can learn or not. Discussion with the virtual classroom, डिस्कशन भी हो जाएगा, असाइनमेंट भी वो आप उसको ग्रेजुअली दे सकते हैं। So this method you can use in all subjects, और यूजुअली आप लोग क्लासरूम में यूज भी करते होंगे। Why it is very much important? Improve the student engagement. सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए, तो यहाँ पे हम वीडियोस दिखाते हैं, एनिमेशन दिखाते हैं, क्विजेज है, गेम्स है ना, एंड दिस वी कैन से students understand concept better. These are the things that we can use through only the teaching, only through the lecture. ये हम यूज कर सकते हैं। Then here we can say supported different learning styles. Some learner by seeing, some learner by hearing, some by doing technologies. So everyone are using different type of method in it. Then students can learn according to themselves. Technology support visual, authority, hand-on learning, helping on students learn effectively. This everything is available with this mode, right? Now the next is promote personalized teaching को हम पेज देते हैं, रिवाइज करते हैं टॉपिक को,
feedback we can get from the students. And what the other thing, जैसे हमें provide on the online mode, that is a technology based, it is a MOOC, research material you can provide, e-book, educational videos. यहाँ पे कितने सारे faculties हैं और the professors, they are means they are the guide of the research scholars, जो as a guide work करते हैं. यहाँ पर है जो as a guide है. Yes, I have like two research students have submitted Okay. and still under me. Okay. So, madam, you are using anything in this way? कि आप इसके through you can search for the review literature. What the things you are providing to Yes, the I students? have provided all the links to them so that they can go through the thing. But Okay. primarily, resource matters a lot for me. Uh-huh. Everyone is more focused on online research, which is like just a part for me. Yes. So जैसे आप I have हाँ given all the links and they can follow the links. But basically, I focus on the primary sources which they have to study. If they face problem, I go through it with them, and obviously we are online with the problem, doubt clearance and everything. And then I generally give them certain questions and projects so that they can relate their thesis to it. So this is okay how they go that through. you are using. So it's Very like I have also like supported them to attend conferences so that they can get ideas. In fact, I allow them in my teaching sessions where they can take 15 minutes of teaching. Maybe it can be micro teaching, not more than that. So these are the methods which I have like involving my research scholars into it. Besides, most of them have like they are working people, so they have been like going through all the experimental learning also. So these are the basic things which I have been using like to uh, motivate them and to go through, because research for them is really difficult, especially for those who are like So working. agree. Otherwise, what happened, ma'am? Most of the faculties, they are just using the Shodh Ganga. Just use the Shodh Ganga. I don't want them to go to Shodh Ganga, Very good, very good. taking it from there. And I told you early only, because I don't prefer secondary material till they are like well known to their own primary resources. बिल्कुल बिल्कुल. So that is how like I have done my research. So I prefer like a traditional method, but yes, I have mixed it with the technology and New technology also. like help them, because they are far off and I cannot connect with them. So then we get together in a conference session, and there we discuss all the things that they are facing. And generally, they send. I prefer reviews or the progress report that they can submit so that we can go through it together. अच्छा, research report लेके. Okay, okay. That So is a nice one. methods that I use for my research scholars. So, ma'am, which college you are? In which university? I am from Veer Kumar Singh University, that is in Bhojpur. Okay, Bhojpur. Bhojpur, it's in Bihar. Acha, it is in MP also, ma'am. Okay. That is one as like. Acha, it is in Bihar. Yeah, it's in Very Bihar. nice, very nice. Okay, so this type of things you are using for the research. Very good. So you are giving some type of quiz also, ma'am, for the students, or proper research related? So Very good, ma'am. Very good. So in that way, you are using the technology also for your research work for the students who are yeah, under your observation. They are doing the PhD. yes. Very good, very good. So this one is really nice. Very appreciable, ma'am. This really nice for us. The repositories, referring to all the repository, it may be beneficial just to broaden up your mind, because you don't have that access to all the libraries around the world. Correct. What you say. Like today, we have online libraries
obviously they can access, but in this digital technology era, most of them prefer to go digitally. So even if they are preparing a paper or a research paper, I prefer them to search the original resource, so Which is that helpful for the plagiarism also. yeah, and Uh-huh. plagiarism matters a lot. So plagiarism is not my cup of tea. Okay, very good. So that is very difficult, and they find it difficult with me because most of the um, people who are like having research scholars, they go easy on them. But हाँ, unfortunately, I'm not able to go easy on them because I have not led a very easy. नहीं मैम, ये जरूरी भी है. एज ए रिसर्चर यू आर परफेक्ट, वी कैन से ये परफेक्ट रिसर्च आप करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है. ओरिजिनल काम का एक अलग ही मजा है मैडम। अलग अलग मजा है, करेक्ट, बहुत सही, गुड मैम. थैंक यू मैम। Last, we can say that the 21st century, the technology based teaching helped the student to develop important skills like the critical thinking. जैसे मैम ने बोला कि they are using these things in technology, also using in the research. So in that way, the students definitely प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज दे हैव इंक्रीज, है ना. तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है. कम्युनिकेशन इम्प्रूव, दैट एनकरेज द एक्टिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग. दे वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स एंड वांट टू रिसर्च ऑन दैट दिस के व्हाट हाउ कैन वी सर्च दिस पर्टिकुलर things from where we can get these things, and support the inclusive education also. Today nowadays after this NEP 2020 इंक्लूसिव एजुकेशन का आना हुआ है. अब बहुत ज्यादा चीजें चेंज आई है, उस पर ज्यादा बात बोलूंगी नहीं मैं. तो वहां पे भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इम्प्रूव टीचिंग efficiency, teachers can use the technology, lesson planning, assessment, evaluation, timely feedback देना बच्चों को, save time, improve teaching, prepare students for the digital world since society and the workplace are increasingly digital. Technology based teaching prepares students for a life, real life challenges and the future employment. तो ये सब करने से क्या फायदा है कि we are making or we can make a student like that कि they can face the problems, real life problems, challenges they can face, और उससे डरे ना, they can solve their problem. So this is the thing we are using here. एंड बेनिफिट ऑफ क्या रहता है इसका, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम से हम सॉल्व भी करते हैं. तो इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, सपोर्ट पर्सनलाइज लर्निंग, improve digital literacy, makes learning interactive and the flexible, help in inclusive education. So these all are the benefit of the technology enhanced learning. ये सब फायदे होते हैं हमें. नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर इन द TEL. टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग में क्या रोल है? डिजाइनर ऑफ द डिजिटल लर्निंग एक्टिविटीज. यू कैन ऑल्सो अ पर्सन लाइक डिजाइनर ऑफ अ डिजिटल लर्निंग एक्टिविटीज. आप खुद ही कुछ एक्टिविटीज के बना सकते हैं, बता सकते हैं योर विथ योर ओन आइडियाज. फैसिलिटेट एंड मेंटर, you are called as a facilitator mentor. Guide in selecting appropriate technology, ensuring meaningful ethical use of technology so that we can use. Formative assessment. Pedagogy is the teaching through a teaching approach in which assessment is used during the learning process. Monitor students understanding, give time feedback, improve teaching learning outcomes. Its purpose is learning improvement, not grading. Continuous and ongoing. क्या फायदे हैं, फीचर्स क्या हैं? कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग. फॉर्मेटिव, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू. फॉर्मेटिव मीन्स रेगुलरली वी आर टेकिंग असेसमेंट. सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग हमको पता चलेगा असेसमेंट क्या है, बच्चे कैसे काम कर रहे हैं. डायग्नोज पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस लर्नर. फीडबैक ओरिएंटेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड है ये. इम्प्रूव बोथ टीचिंग एंड लर्निंग. So it always improve your learning and teaching process. So formative and summative जो दोनों है, now in the क्या बोलते हैं, continuous comprehensive evaluation. For the continuous comprehensive evaluation, formative assessment is really very important nowadays in the education field. We are using the
CCE. तो CCE के लिए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ और क्या होता है कि ऑब्जर्व स्टूडेंट लर्निंग रेगुलरली, आस्क प्रॉब्लम क्वेश्चंस, provide timely and the constructive feedback, modify teaching strategies. So this you can use in this method. Now example अगर हम देना चाहें, photosynthesis पढ़ा रहा है टीचर, तो student responds orally or the through a quick quiz. Teacher identify the misconception, immediate feedback is giving, lesson plan is adjust accordingly. जहां आपको लगता है, if you want you can change the lesson plan accordingly. And I know that every teacher is use this method. Why we are using this method here? Because we know that today is CCE using in the classroom teaching, not only in the school, in the colleges also. So as per that we are using a summative and the formative teaching method. तो यहाँ पे हमने जैसे फॉर्मेटिव लिया, तो हम बार बार यूज करते जाएंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी क्या स्ट्रेटेजीज आगे बढ़नी है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिव टूल्स क्या है? क्वेश्चन आंसर सेशन, क्विज एंड द एक्साइट टिकट, क्लास डिस्कशन, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, वर्कशीट एंड असाइनमेंट, कंसेप्ट मैप एंड ऑब्जर्वेशन एंड द ओरल फीडबैक। इस थ्रू हम फॉर्मेटिव टूल अप्लाई कर सकते हैं विद इन ऑनलाइन मोड। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ क्लासरूम फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई द, नेक्स्ट इज द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड ओरली और द टीचर आइडेंटिफाई माइक्रो कंसेप्शंस, इमीडिएट फीडबैक इज गिवन, लेसन प्लान इज एडजस्ट अकॉर्डिंगली। आपको पता है कि फर्स्ट टाइम देयर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, सेकंड टाइम you can change the lesson plan accordingly. So this is the next way we can use. Advantage: improve the learning achievement, reduce learning gap, encourage self-assessment, align with the NEP 2020 out-based education. ये आप पूरा कर सकते हैं. Support continuous and comprehensive evaluation. Last one is the designing thinking. Designing thinking में instruction approach, creative interactive problem solving. This we can use. ये भी fully based on the creativity, integrated empathy, reflection in the teaching learning process. Learner centered है ये, learning by doing, collaboration, creative and innovation, reflection and continuous improvement. So these all are the things which can use. What is the role here of the teacher? She is like a facilitator. Real world problem you can provide him and the student can solve the problem. Encourage inquiry and experimentation, guide reflection and improvement. Role of learner क्या हो जाता है? Active problem solver, creative and the creative thinker, collaborator and the innovator, reflective learner. So these are the things which can help for the student. Example अगर देखते हैं, empathize, students observe waste issues in the school, है ना, ये कर सकते हो आप. Define problem, improve waste segregation में कैसे करेंगे आप ये काम, आप बच्चों से you can give this type of work to the student. Student observe waste issues in the school, पता करेगा कि क्या क्या रीजन है, and what is the problem of the students, why they are throw some waste means polythene and everything here and there. So they can find out, define, उसको बताएगा, एग्जाम्पल देके आप उसे पूछ सकते हो. तो प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम, इम्प्रॉपर वेस्ट सेग्रेगेशन, आइडियाज लाइक कलर कोडेड बिन्स, अवेयरनेस पोस्टर, ये सब आप उससे पूछ सकते हैं, वो बच्चा बता सकता है. दे कैन गिव द आइडियाज. प्रोटोटाइप, क्रिएट द बिन मॉडल्स एंड और चैंपियंस, टेस्ट, इम्प्लीमेंट एंड द रिफाइनिंग बेस्ड ऑन द फीडबैक. तो ये सब तरीके से आप टेस्ट भी ले सकते हो और एक टाइप का आप इनोवेटिव लर्निंग उस बच्चे से करा सकते हैं. तो दिस इज फॉर टुडे सेशन. और ये सारे मेथड्स में आई थिंक you understand very well ki what are the new pedagogical methods. Some more methods are available here, but in this time period I just using this method, and I can say that hope you understand it very well, and I interact with you, and it was really very nice that you share your views
your points. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा discussion हुआ इस पे. And all the best for your future, and try to use these things in your teaching and be a good teacher, be a smart teacher. Like a smart board, you also be a smart teacher. Thank you so much. Thank you for this session, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. I extended my sincere gratitude to Dr. Preeti for delivering such an insightful and enriching session during this faculty development program. Your valuable knowledge, practical insights, and engaging presentation have greatly benefited all the participants. Thank you, ma'am, for your time, guidance, and wonderful contribution. Thank you so Thank much. you so much, ma'am. Thank you, Chirag sir. Thank you, everyone. Thank you so much. Dear participants, I have shared the feedback link, so kindly fill the link